अब हामी समक्ष वक्तव्यको क्रममा I would like to request Sri Pradip Mazumdar, Honorable Minister in charge, Panchayati and Rural Development Department, Government of West Bengal, to deliver his address, sir. सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं नेपाली कुरा भन्नु सक्दैन, मगर अब जो पंचायत बन चुका है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना था, अब मैं सीख लूँगा। अनित जी मुझे हेल्प करेंगे। मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ कि मैं हिंदी और अंग्रेजी में मेरा जो बोलना है बोलने का। सबसे पहले मैं हमारे पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का जितने प्रधान और सभापति आए हैं, उन लोगों के माध्यम से पहाड़ वासियों को मेरा अंतर का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने पंचायत निर्वाचन में इतना भारी जनसंख्या शामिल हुए थे और आप लोग जीत के आए हैं। सारे पहाड़ वासियों को आप लोग सहायता करेंगे, इसके लिए आप लोगों को अभिनंदन। जितने हमारे यहाँ ऑफिसर्स लोग लोकली ये इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए शामिल थे, उनको भी आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट देम फॉर टेकिंग lot of initiative and hard work they had put in to have this election so well organized and so peacefully done. I'm grateful today that we have with us the Honorable Minister Sri Arup Biswas, वो आवासन, युवा, क्रीड़ा और शक्ति दफ्तर संभालते हैं और संभालते हैं हमारे उत्तर बंग की जो संगठन है उसका भी देखभाल करते हैं। हमें जहाँ भी उपस्थित होते हैं काफ़ी शक्ति मिलता है उनसे, तो मैं उनका आभारी हूँ कि वो भी आए हैं, आज ये गुरुत्वपूर्ण सभा में शामिल हुए हैं। हमारे साथ जो निर्वाचन के पहले से हमें याद दिला रहते थे पहाड़ के उन्नयन के बारे में, श्री अनित थापा जी, CEO of the GTA, is a very focused political administrator I've seen, and I appreciate. I have so far till yesterday received from him 5 communications. Each one is loaded with specific work or specific decisions that he had been asking for. This is a very, very rare quality, and I'm very sure with his guidance, we all will be able to ensure very accelerated development of the hills for the benefit of the people living in the hills. We have with us our Secretary, Panchayat and Rural Development, who I don't know. I have a habit of working till late hours. I've never been disappointed by any message that I have sent him at any late hours or early hours of the following day. He responds immediately. So you can imagine what kind of devotion he has to his own work. We also have, this is Dr. P. Ulganathan, I just talked about. We have our Panchayat and Rural Development Department's Commissioner of Panchayats, Sri Vishwajit Datta. Dr. Preeti Goyal is the District Magistrate. थोड़ा हिचक आ रहे हैं, उनका हिंदी इतना बढ़िया चेस्ट हिंदी में भाषण सुनने के बाद अब हिंदी बोलने में भी हिचक आ रहा है मुझे. Anyway, you have heard
words and words of wisdom and wishes. A lot of expectations from you all. Sri Bala Subramanian is the District Magistrate of Kalimpong. We have with us the Superintendent of Police, Darjeeling, Mr. Prakash. Madam Shanta Chhetri, our ex-Honorable Member of Parliament. She had also, I have had the opportunity of meeting her in my office earlier. She is very keen on development of hills. Sri P.R.I, Administrator of Municipality of Mirik. Sri Ratan Thapa, Executive PRD GTA. Sri Ranjan Sarkar, Deputy Mayor of Shiliguri Municipal Corporation. And of course, all our senior officers from Panchayat and Rural Development Department who would be enriching you, both the newly elected functionaries of 2 Tier Panchayats in Darjeeling and the officers who would be assisting or guiding them on day-to-day work. Before I proceed any further, I must acknowledge that if today it's really bringing in a new dawn in the hills of Darjeeling and Kalimpong, it's our Honorable Chief Minister जिन्होंने काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे कि हम पहाड़ वासियों के हमारे भाई बहनों को उतना उम्दा सर्विस नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पंचायत इलेक्शन, पंचायत समिति 4 डेकेड्स 40 साल के लगभग हुआ नहीं है, ग्राम पंचायत 22 साल हुआ नहीं था और करने में कुछ कानूनी दिक्कत था। ये उनका निर्देश था कि अमेंडमेंट लाया जाए। वो अमेंडमेंट लाने के लिए विधानसभा में जो आपत्ति हम देखे थे, विपक्षी दलों के जो विधायक थे सारे, वो उनका जो नाकामी है उसको ढांकने के लिए वो लोग ये अमेंडमेंट का विरोधिता किए थे। मगर हमारे नेत्री के निर्देश अनुसार हम लोग वो अमेंडमेंट किए और उसी वक्त विधानसभा में वचन दिए थे हम कि हम एक साथ में, जैसे प्लेन्स में करते हैं, जब निर्वाचन होगा एक ही साथ हम लोग हिल्स में भी हमारे भाई बहनों को उम्दा सर्विसेज देने के लिए हम लोग निर्वाचन करेंगे। उसके आगे तो आप लोग जानते हैं। आप क्योंकि 40 साल पंचायत समिति का कोई कुछ था नहीं, यहाँ पे 22 साल ग्राम पंचायत नहीं था। 2011 के बाद जो पंचायत में, जो पंचायत के माध्यम में जितने भी डेवलपमेंट्स जिस तरीके से हुआ और जिस पर हम लोग अभी भी जो हम लोग का एजेंडा है उसको वेरी ट्रांसपेरेंटली, वेरी इफेक्टिवली एंड ऑन टाइम करने का कोशिश कर रहे हैं। काफी नया तरीके, नया स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स इन पंचायत हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं इन कोर्स ऑफ टाइम। मगर अब जब आप लोग यहाँ नया ग्राम पंचायत और पंचायत समिति बना चुके हैं तो ये हम लोग पर काफी इम्पोर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप लोगों को एम्पावर किया जाए कि क्विकली यू कैच अप एंड यू बी ऑन इन बिजनेस एज फास्ट एज पॉसिबल। इन द बैकग्राउंड
under instruction from the Honorable Chief Minister. Our department had been working hard to ensure that the lifeline, the fund also comes simultaneously. We had provided already about 160 crores for building roads in the hills through other funds, but through both 15th Finance Commission and State Finance Commission, the Panchayat system will be provided with another 200 crores very shortly. There will be infusion of about 35 crores for development of self-help group, empowerment of our sisters and mothers has been a flagship program of this state. You will be very happy to know that the state of West Bengal has been able to be at the highest level of developing self-help groups. We have now crossed 10 lakh 30,000 self-help groups, which is the highest in India, and we are regularly trying to enhance the ticket size of the credit, apart from ensuring very effective credit linkage with every group which is active. Now coming back to the purpose of this training, my previous speakers have already enlightened you about that. Since the Panchayat elections were over in this year, 2023, we had launched training program in other districts of all the newly elected, and we have also launched training of our officers who are involved in this, the DPRDOs and the BDOs, joint BDOs particularly, on the new systems and refresh their ideas about the newly introduced systems earlier. Now, we have been looking for this opportunity to also induct you to the same system, and here we have made a difference because our officers who would be helping you in day-to-day work, we have also invited them to join this program so that they would be able to not only help you, guide you to achieve your goals with their ideas and your ideas. If there are issues which come to your mind during the course of this program, please feel free to flag them. I'm very sure my senior colleagues who have come from the State Department, they'll be too happy to either carry it back for consultation and come back with the solution. Otherwise, from their own experience, they'll give you the solution here and now. I'll just briefly tell you what we propose to do. In the training program that we have launched for the first time ever, we have onboarded Indian Institute of Management, where senior elected representatives who would be running Jila Parishads, they have been subjected to residential training for 5 days. We have consulted and obtained faculties from Indian Institute of Technology. We have also consulted 4 more nationally and internationally famed institutions who train people on rural development management, and they have been actively helping us in developing the training module. इसके बाद we want to train and
try to build capacity, techniques to introduce new concepts of office management, because that has become very, very important. आप लोग जानते हैं कि जो हक है, जो मिलना है, वो सब रोक दिया गया under false allegation. Even 100 days work performed with the within the approved mandates in 2021, the wages have not been paid. What has been loosely mentioned everywhere, that in West Bengal we have false job cards. Please check the Government of India's NGNREGA portal. You will find West Bengal job card, registered job card holders have 99.5% plus Aadhaar CD. Comparatively, there are states like Maharashtra, even Gujarat, Uttar Pradesh, where it ranges between 60 to 80%. So if at all you have any suspicion about fakeness of the registered job card holders, the states which have not yet been able to catch up with West Bengal should have been first bracketed and deprived of funds. So in that backdrop, I would like to highlight the importance of maintaining records, ensuring transparency, so that we don't become vulnerable. Even with false allegations, we should be able to produce records to substantiate our claims. Coordination and interlinking about two-tier panchayats. हमारे जो संगठन होगा, जो पंचायत और पंचायत समिति में, there should be lot of cooperation and coordination. Leadership in rural local governance. स्वायत्त शासन में ये leadership जो पंचायत समिति के सभापति बनेंगे, जो प्रधान बनेंगे, उनको सारे सभासद लेके, मेंबर्स को लेके जो कोऑर्डिनेशन माध्यम से आप लोगों को काम निभाना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारा यहाँ इंडक्शन कोर्स में बताया जाएगा। कम्युनिकेशन के बारे में मैं बोल चुका हूँ, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ताकि हर एक स्तर के जो नागरिक हैं अपना अपना एरिया में, उनको डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलपमेंट के लिए आपको बोल चुका हूँ, वहाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है हिल्स में। कल मैं जब गया था जीटीए का ऑफिस में, अनिल जी हमें बोल रहे थे कि द बेस्ट परफॉर्मिंग एसएचजी is from the hills. I feel very proud. I was thinking there are certain requirements of that, how we can meet that, we are working on it. So there are ways of ensuring inclusive growth, but please focus on transparency. There will be a lot of efforts to induct you in the systems that we have introduced. Fiscal prudence and generation of their own source of revenue. आप लोगों का पास जहां भी रेवेन्यू अर्न करने का कोई स्कोप होगा, उसको होल्ड करना पड़ेगा. You have to develop that and make sure that you earn revenue from there, because this kind of deprivation that we have suffered since 22 March has made us realize that wherever there are resources which can generate revenue, cannot be neglected anymore. So there will be discussion on that to encourage you to generate revenue from your own resources, and localization of sustainable developmental goals. So I'm just touching on the main points. There will be more detailed discussion, but ये
एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। आई विल रिपीट इट वंस अगेन कि अगर आपका मन में कोई शक हो, कोई प्रश्न हो, ये जरूर उठाइएगा। ये आप लोगों का लिए ये प्रोग्राम किया गया है, और आप लोगों का सोच में अगर काम करने का टाइम में ये लगे कि ये आपको सहायता कर रहा है, तो हम लोग ऐसा रिफ्रेशर कोर्स हम लोग हर 6 महीने में फिर करने का उम्मीद रखता हूं। आइडिया है हम लोग सब मिलके स्टेट से ग्राम पंचायत तक कोऑर्डिनेशन और सीमलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग बिल को आगे बढ़ाएंगे। ये लक्ष्य रख के हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं, भविष्य में भी करेंगे। हो सकता है अनिल जी का कृपा से मैं अगले बार नेपाली कूड़ा से बात करूंगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि when you leave this program, you'll be more confident to do what you are supposed to do and you reach your goal at much ease. Thank you so very much, and once again my apologies for not being able to speak in Nepali.